So we are starting with our second discussion for the day, which is on employee happiness and engagement facilitating business, productivity and brand. First off, I would like to invite upon stage please Dr. Sujata Shahi, Group Vice Chancellor of IILM University. Can we have a round of applause for ma'am? Now I'd like to please call upon stage Krishan Guptaa, Managing Director of Organic Wellness Products Private Limited. Can we have a round of applause for sir please? Next up, I'd like to invite upon stage Mr. Anil Bhasin, who is an author and motivational speaker. Finally, I'd like to please invite upon stage Mr. Saurabh Sharma, Head of People at Hunch. Please give him a round of applause. Dr. Sujata Shahi, Group Vice Chancellor of IILM University. Dr. Shahi plays a crucial role in shaping the university's strategic vision and advancing its academic excellence. Her insights into higher education and institutional developments are highly anticipated. Krishan Guptaa, Managing Director of Organic Wellness Products Private Limited. Shri Gupta is a prominent leader in the wellness and consumer goods industry. His expertise and leadership are expected to offer valuable insights into the evolving landscape of wellness and organic products. Mr. Anil Bhasin is a renowned motivational speaker and advisor. Mr. Bhasin, with his extensive experience and inspirational approach, is set to offer valuable perspectives on personal and professional development. His work with Kentaro Systems exemplifies his commitment to empowering teams and fostering growth. Mr. Saurabh Sharma, the Head of People at Hunch. As our distinguished speaker, Shri Sharma's innovative approach to human resource is expected to provide valuable insights into building a dynamic and effective workforce in a rapidly evolving industry. At Hunch, he leads the people function with a focus on talent strategy, organizational development, and employee engagement, shaping the company's culture and aligning HR practices with HR strategic goals. Now, before we commence with this particular panel discussion, ma'am, I'd just like to take a second to thank our sponsors. So our sponsors are Indian Oil Corporation Limited, NLC India Limited, GAIL India Limited, IFCO Limited, Oil India Limited, Bamalori and Company Limited, Triveni Engineering and Industries, MOIL Limited, LIC of India, Central Cottage Industries Corporation of India Limited, Organic Wellness Private Products Limited, NDIM, and thanking our media partner, India Blooms. Over to you, ma'am. Thank you. Good morning and namaskar to all of you. First of all, thank you for joining us today to deliberate such an important topic, employee happiness and engagement, facilitating productivity and brand. This is a very important topic for all of us. Before we start, I would like to thank you, Mr. Sood, and the organizer for inviting me for this panel. What I feel about this panel is more or little bit linked with my profile also, because I am from psychology background and employee motivation, engagement, these are part of my teaching learning process. So before I start, I just remember
A few lines from a very famous poet, Ramdhari Singh Dinkar ji. खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है, मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है. The human power is so important, so strong that human power can convert stone into water. And what kind of human power? The power who are engaged, who are motivated. They can change everything. Well, not only the productivity of the organization or creating brand for the organization, but that can change everything. I was just thinking that I'm from psychology background. I teach organizational behavior and I teach motivation as one of the topic, and where we discuss how to motivate employee, how to engage employee, because ultimately motivated and engaged employees are satisfied in the organization, and that satisfaction leads to turnover, financial turnover, or productivity. You can take financial turnover as a part of increased productivity in your organization. So this satisfaction, the satisfied employee involved in the work. And this is most important for any organization. Nowadays, we are moving towards like way behind. We are leaving baby boomers. Now we are moving towards Gen Z and millennials. Majority of our sectors, you can start from IT sector, you will get 50 to 60% millennials, Gen Z. Moving to finance sector, any sector barring the manufacturing, where you will have only 20% kind of thing, this kind of people, this kind of workforce, they are coming with a different attitude, they are coming with a different values. They are full of technology. Don't you think it's a question for us how to engage, how to motivate? How to create happiness quotient for these youngsters who are coming and joining our organization? That is why we need to deliberate. We have to find out certain ways, certain modalities to engage employees and organization. Motivation is one thing that we can provide through money, we can provide through culture, we can provide through either hygiene factors, but how to engage them? Are we taking right person? Suppose you are thinking the link, so many factors, you will find later that are we hiring right person for the right job? Are we engaging as per their competency to the job? So many factors are coming and lined up in front of us. What I was thinking, can we change a culture? The employee engagement, can employee engagement reduce the absenteeism in the organization? Can employee engagement facilitate productivity in the organization? How can I say brand of one organization, that this brand is good? Brand is not related to infrastructure. Brand is not related to technology. Brand is a product which we feel to buy from this organization because we feel this one is like very good, ethical, everything, and we can buy the product. Brand is kind of culture of that organization, and who builds that culture? The employees create that culture. And I remember Shweta was talking about top-down and bottom-up approach. Actually, we need to work on top-down, bottom-up approach to create a culture where employee would be motivated enough to give you productivity, to increase your productivity and create a brand ambassador. Those employees will go in market and create a brand ambassador for your organization. So I'm happy that we have very diverse panel with me. Anil is a motivational speaker. We have wellness. We have Saurabh.
all three combinations, and my background is psychology, I think we can give you certain takeaways from our sessions. I was just going through some research data. What I found that what Gallup says, why employee happiness we are talking about, and Mr. Sood has taken as one of the topic for this panel. So why employee happiness? I was just going through some data, and what I found, what Gallup says, 21% productivity increases once your employees are happy and engaged. Another psychologist is Sean. What he said, not 21%, 31% productivity increases in organization once your employees are happily engaged with their job. They can put their 100% to the job, and automatically productivity will engage. I have certain points in my mind. Do we think brand and brand success, business success, both depend on employee engagement? If yes, we have certain process to engage and motivate employees. Do we think that it can reduce absenteeism in our organization? It happens. We teach also, once you are not happy, you are not willing to go to organization. You are giving different excuses not to go to the organization. This is the absenteeism or turnover of employee. You want to increase turnover of employee or decrease. That is your choice. Then engaged employee can add value through their creativity and innovative mindset. Again, this one is adding value to the productivity, product and brand. We are redundant with the same type of technology and culture, or we are moving. We are moving to cater a new technology, new innovative mindset for our employees. So this is again a part of employee engagement. Then the satisfied employees, always brand ambassador for your organization. We are feeling proud to say, I'm in this organization for 15 years, since last 15 years, 16 years. It means I have created brand. I have taken organizational citizenship. So this is our, my thinking regarding this topic, slightly different from the previous one where we were talking about technology. Here we are talking about human being, which is most important asset for any organization. I wanted to discuss the flow of this session. The 10 to 15 minutes, all panelists, they have to present their point of views related to employee engagement and happiness quotient, how to create. Then after that, floor will be open for your question answers. And I hope we will get, because this one is very important topic, and we will get certain questions which will enhance our experiences also, our learning also. It's not like one-way communication. We are expecting questions from all of you. And then after, I have 1 or 2, 3 questions for summing up, which again panelists will help me in summing up and coming out with certain key takeaways from this session. So I hope we will deliberate and we will discuss employee happiness and engagement in this session, and we all will have certain takeaways. So now I would like to invite Anil for his insight. Anil is already, accomplished business growth strategist in the FMCG industry. He has successfully led major initiatives, including market expansions, product launches, and new business verticals. Bhasin was the president of Havels India Limited. Now he handled everything, product, then expansion, all somewhere linked with engaged employee and the good culture of that organization. If culture is good, then expansion is possible. The new brand is coming, everything. So I would like to invite Anil
for his insights. Anil. ये चश्मा आपका रहेगा. I am fortunate, honored and privileged to be part of this August gathering. वो कहते हैं सकून दिल के लिए कुछ तो एहतराम करूं. सकून मीन्स ब्लिस, हैप्पीनेस के ऊपर बात कर रहे हैं. सकून दिल के लिए कुछ तो एहतराम करूं. नज़रें जो तुमसे मिले तो तुमको सलाम करूं. बहुत बड़ी बड़ी डिग्नेटरीज बैठी हैं यहाँ पे. सकून दिल के लिए कुछ तो एहतराम करूं. नज़रें जो तुमसे मिले तो तुमको सलाम करूं. मुझे तो होश नहीं, तुम ही मशवरा दो. कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ ख़त्म करूं. And I am thankful to Mr. Sood also who has given me this opportunity to come to this place. सबसे पहले एक छोटी स्टोरी से काम स्टार्ट करूँगा क्योंकि हमें स्टोरीज से याद रहता है. बाकी जितना मर्जी भाषण देते रहो, कुछ लोग लिख के भी चले जाते हैं. वो लिख के भी जाते हैं तो शायद देखते नहीं जाके कि यार ये लिखा था उस टाइम पे तो ठीक लग रहा था, अभी ठीक है नहीं ठीक रहा था. स्कूल में 3 इडियट्स की तरह 3 बच्चे होते हैं. हम जब स्कूल में होते हैं तो रेनी डे की वेट कर रहे होते हैं, किसी और डे की वेट करते हैं छुट्टी हो जाए, क्योंकि स्कूल में भी ज़्यादा मन नहीं करता जाने का, क्योंकि टीचरें भी वही पढ़ाती हैं जो हम पढ़ना नहीं चाहते. मेरी वाइफ खुद है पीजीटी केमिस्ट्री है, तो वो पढ़ाती है जो मेरे को आज तक केमिस्ट्री समझ नहीं आई. घर में कोशिश कर रहा हूँ अपनी भी केमिस्ट्री ठीक करने की उसके साथ. तो 3 बच्चे थे, तीनों शरारती थे, 3 इडियट्स की तरह. तो उन्होंने कहा यार कल क्लास नहीं लगनी चाहिए तो क्या करना चाहिए. तो उन्होंने कहा यार 3 जानवर पकड़ लेते हैं. देखिए ह्यूमन बीइंग कितना इल इक्विप्ड और डिफेंसलेस है कि हम एक बंदर का बच्चा भी नहीं पकड़ सकते, हम एक डॉग भी नहीं पकड़ सकते. तो उन्होंने 3 सबसे शरीफ जो जानवर है वो है बकरी, वो पकड़ ली. और पकड़ ली तो तीनों में से तीसरे को, एक को तो थी कि क्या शरारतें करनी है, बाकी 2 को पता नहीं था. तो उसने कहा एक पे नंबर 1 लिख दे, लिख दिया उसने पेंट से. दूसरे पे नंबर 2 लिख दे, 2 लिख दिया. और जो लिखने वाला था उसको लगा तीसरे पे 3 ही लिखना है, तो उसने कहा नहीं नहीं इस पे 3 नहीं लिखना, इस पे 4 लिखना है. तो 3 बकरियां थी, नंबर लिखा 1, 2 और 4. और तीनों बकरियां रात को स्कूल में छोड़ दी, कॉलेज में इनके. सुबह हाउसकीपिंग वालों ने 1 घंटे में तीनों बकरियां पकड़ ली और सारा साफ कर दिया, पूरा जो उन्होंने गंद बचा रखा था. पर पूरा दिन स्कूल नहीं लगा. स्कूल क्यों नहीं लगा? हम लोग भी हैप्पीनेस में तीसरे नंबर की बकरी ढूंढ रहे हैं जो है नहीं. वी हैव टू लिव विद इम्परफेक्शन लाइफ. देखिए लाइफ में कुछ चीज़ इम्परफेक्ट नहीं होती. अमिताभ बच्चन 6 फुट का है, आमिर खान, सलमान खान और तीसरा खान शाहरुख खान, तीनों की हाइट 5 फुट 5 इंची है शायद. वो 1 मिलीमीटर भी अपनी हाइट बढ़ा नहीं सकते. भगवान ने जो कुछ हमें दिया है शरीर, उसका 95% तो कवर्ड है ऑलरेडी. मैंने पूरा सूट पहन रखा है, हाथ मेरे शायद दिख नहीं रहे, इतना ही फेस दिख रहा है. और आजकल लोगों ने दाढ़ी भी रख ली तो और भी छुप जाता है बिल्कुल. तो कहाँ दिखता है कुछ को. तो अभी शुरू करते हैं हम. मैं थोड़ा बेस पे जाऊंगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है. कई बार हम क्या है सोल्यूशन देना शुरू कर देते हैं कि भैया ये कर लो वो कर लो. आप किसी को एक प्रॉब्लम बताओ एकदम से सोल्यूशन बता देगा, रूट कॉज प्रॉब्लम में जाएगा नहीं. रूट कॉज प्रॉब्लम में अगर हम जानना चाहें तो देखो वर्ल्ड ऑफ बिजनेस हैज गॉन थ्रू 3 बेसिकली रिवोल्यूशंस. सबसे पहली रिवोल्यूशन थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो हमारे फादर ने देखी 47 के बाद में जब इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ देश. तो उस टाइम पर जो है रिवोल्यूशन थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. उस रिवोल्यूशन में जिन लोगों को नौकरी चाहिए थी, हम ऑफिस की बात कर रहे हैं हैप्पीनेस की, उन लोगों को नौकरी जो मिली उसी नौकरी में वो चिपक गए. और उस नौकरी में उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था सर्वाइवल. उस टाइम पर घर में 5 बच्चे होते थे और भी चाचा ताऊ का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आ जाती थी कहीं ना कहीं उसके ऊपर. तो लोगों को सर्वाइवल का इशू था, रोटी कपड़ा मकान का इशू था उस टाइम पर. तो लोगों ने जो उस टाइम पर नौकरियां करी वो रोटी कपड़ा मकान के लिए करी. चाहे वो मेरे फादर थे, माय फादर वर्कड इन एयरफोर्स, तो उन्होंने करीब 30 साल नौकरी करी, पर वो एक परमानेंट नौकरी थी. और इसी बात पे मैं आता हूँ सर्वाइवल पे. सुंदर पिचोई की मदर एक बार ही चैट कर रही थी कहीं पार्क में, तो उसकी मदर ने, और औरतें बैठी होती है बात करती हैं, अभी बेटा क्या करता है. तो उन्होंने कहा बेटा एक प्राइवेट नौकरी करता है. तो कहती है अच्छा. उसकी माँ फिर कहती है सुंदर पिचोई की माँ कहती मैंने उसको बोला था थोड़ा और पढ़ लिख जाता तो शायद गवर्नमेंट नौकरी मिल जाती, गूगल का सीईओ. और आज भी हम गवर्नमेंट नौकरी की तरफ देख रहे हैं कि परमानेंट नौकरी कहीं मिल जाए तो उसमें हैप्पीनेस मिल जाएगी. हैप्पीनेस गवर्नमेंट नौकरी वालों के पास भी नहीं है, आप किसी से चेक कर लो जाके. तो वो एक सर्वाइवल का इशू था. दूसरा आया इन्फॉर्मेशन की चीज़. इसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बनाया जो मैं हूँ.
आज मेरी भी जो है, मैंने अपने आप को बनाया है, और उसमें भी कई बार लोग कहते हैं मैं सेल्फ मेड हूँ। मैं करेक्ट करना चाहूँगा वर्ड यहाँ, सेल्फ मेड नहीं होती, पूरी फैमिली, पूरा घर, पूरा परिवार आपके साथ में होता है, तब आप बनते हो। आप अपने आप को बादशाह बनने शुरू कर देते हो, इस तरह की कॉन्फ्रेंस में आके खड़े कि आई एम ए सेल्फ मेड पैन, आई वाज जीरो टू हीरो। कुछ नहीं होता सर जब तक फैमिली आपके साथ नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन जो थी उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ना शुरू हो गया। रोटी कपड़ा मकान के बाद में आपको क्या ज़रूरत थी? एक गाड़ी की ज़रूरत थी, एक मकान की ज़रूरत थी, बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरत थी। देखो आजकल के बच्चे बाप को कैसे ताना मारते हैं, तुम्हारे पास तो स्कूटर भी नहीं था, मैंने कार ले ली। तुम्हारे पास 2 बेडरूम का मकान था, मेरे को पता है हम 2 कमरे के मकान में 7 लोग रहते थे और किसी को पता नहीं था एक ही टॉयलेट था। आजकल हर बच्चे को अलग टॉयलेट चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाया। अब रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी हो गया था। इस टाइम पे लॉयल्टी डिक्रीज होनी शुरू कर गई। और मैं आपको बताता हूँ लॉयल्टी पहले भी नहीं थी। हमारे पिताजी या कोई और लोगों ने उस एज में जो नौकरियां करी, वो लाला जी जो बोलते थे वही सही है, बॉस वॉस ऑलवेज राइट। नहीं होता भैया बॉस, मैं भी रह चुका हूँ। मैं आज भी एक फादर हूँ, मेरे को पता है मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो जो एडवाइस करता है वो शायद ज़्यादा है। मैं ऑफिस में बॉस रहता था पर घर में मैं बॉस नहीं हूँ, घर में मैं फादर हूँ। तो उस टाइम पर लॉयल्टी डिक्रीज होने चल लगी जो पहले भी नहीं थी। तो सर्वाइवल का इशू खत्म हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अब ठीक हो गया। अब जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं आजकल के बच्चों की, उसमें क्या है, सोशल और डिजिटल एज है। इंफॉर्मेशन इज फ्री नाउ। पहले इंफॉर्मेशन किसके पास होती थी? बॉस के पास होती थी, कैबिन में होती थी इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन फ्री है, सब चीज़ है, गूगल पे आप मारो। मैं अभी जब बोलना था मेरे को, तो मैंने 2019 में भी एक सेशन किया था, उसमें भी यही टॉपिक था मेरा, हैप्पीनेस एट ऑफिस। और मेरा यूट्यूब चैनल है अनिल बिसिन टॉक्स, उस पर भी एक 24 मिनट की वीडियो है। तो मैंने कहा यार ज़माना चेंज हो गया, थोड़ा गूगल मार के देखें कुछ चेंज है क्या। गूगल में बहुत कुछ था पर समझ नहीं आया कि क्या बोलना है क्या नहीं बोला। मैंने कहा अपने दिमाग से बोलेंगे यार, जो 44 साल का एक्सपीरियंस है वो रिलेट करेगा, रादर देन कि मैं गूगल से मार के दे दूँ। वो तो लोग वैसे भी आप देख सकते हो गूगल में क्या है क्या नहीं। अब जो है ना सोशल और डिजिटल एज है, अब बच्चे अलग हैं, आज का यूथ बिल्कुल अलग है। मेरे को कई बार पेरेंट्स कहते थे यू आर यूजलेस एंड केयरलेस। एक्चुअली यूथ इज़ यूजलेस एंड केयरलेस। आज की जो बच्चों की नीड है और ऑफिस की नीड है वो डिफरेंट हो गई। आपको ऑफिस का एटमॉस्फेयर अलग देना पड़ेगा, आपको जिम देना पड़ेगा, आपको कैफेटेरिया देना पड़ेगा, आपको उन चीज़ों की नीड देनी पड़ेगी जो पहले सर्वाइवल और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए नहीं थी। वो चीज़ें अब चेंज हो गई और वो चीज़ें जनरेशन जो जेन जी या जेन जेड कहते हैं, अब सर्वाइवल का इशू नहीं है। इवन आपका जो लेबर है ना, आपका जो पीएन है या आपका ड्राइवर है, उसके घर में भी डिश टीवी लगा है, उसके घर में भी टीवी, रेफ्रिजरेटर, उसके पास भी स्कूटर है। आप उसको नौकरी की धमकी आज की डेट में नहीं दे सकते। पहले नौकरी की धमकी देते थे कि तुमको नौकरी से, आजकल किसी बच्चे को बोलो नौकरी से निकाल देंगे, वो कहता है मैं अपने आप जा रहा हूँ, भाई साहब मेरे को क्या बोल रहे तुम। इसीलिए बच्चों को भी आप कह के बात करनी पड़ती है, रिस्पेक्टफुली बात करनी पड़ती है। एंड अनलेस यू हैव मैकेनिज्म फॉर दीज थिंग्स, जो चाहिए नीड बच्चों को, वो जब तक नहीं होगी, उनको फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, चाहे कैरियर ग्रोथ होगी, चाहे क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब जब जो सोशल और डिजिटल एज में है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई। आज बच्चे को क्या चाहिए? अच्छा खाना चाहिए। वाई 5 days वीक इज़ देयर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को 5 साल लग गए अपने चेयरमैन को ये समझाने के लिए कि 5 day वीक है, क्योंकि उनकी उम्र थी 75+। उन्होंने साइकिल देखी थी, उन्होंने वो गुर्बत देखी थी। तो आज उनको ये कन्विंस करने में कि 5 days वीक चाहिए, क्योंकि आजकल की जो डॉटर इन लॉ आएगी आपके साथ में, वो भी पढ़ी लिखी आएगी, वो भी जॉब करती आएगी, उसको भी सैटरडे संडे चाहिए, उसको भी किचन में काम नहीं चाहिए, उसको भी हेल्प हैंड चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही डिफरेंट हो गई। और हैप्पीनेस और सक्सेस में फ़र्क होता है। मेरे से पहले पैनल में भी बात हो रही थी सक्सेस की। देखिए देयर आर मेनी सक्सेसफुल पीपल दोज हु आर नॉट हैप्पी। हैप्पीनेस के लिए 6 स्पोक्स चाहिए होती हैं व्हील में। पहला है फिजिकल। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो ही आप हैप्पी रह सकते हैं। और मैं कई बार ये कहता हूँ कि जो आदमी मंडे को सुबह उठ के ऑफिस जाना चाहे वही फिजिकली फिट है और वही फिजिकली है। अदरवाइज जितने मर्जी आप जिम कर लो, जाके कुछ कर लो, और आप मंडे को, और मैंने देखा मंडे ब्लूज आते हैं लोगों को, मंडे होते ही लोगों को, मैंने घर में भी देखा है। मेरे को तो कभी ऐसा नहीं लगा 40 साल के एक्सपीरियंस में मेरे को ऑफिस जाने का दिल नहीं किया।
हमें ऑफिस का कल्चर भी अपना ही कल्चर लगता था अपना। तो आई थिंक फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है मेंटली, दिमाग आपका सही होना चाहिए। वो कहते हैं कोयल अपनी कूक से, पेड़ अपने फल से, खेत अपनी उपज से, और इंसान दो ही वजहों से जाना जाता है, एक अपनी सोच और दूसरा अपने कर्म। अगर उसकी सोच अच्छी होगी और उसके कर्म सही होंगे तो वो जाना जाएगा। अदरवाइज इस धरती में हम एक तरह के टेनेंट हैं, आएंगे और चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। कितने लोगों को आप उसके बाद में याद रखते हो? तो आई थिंक सो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और अभी भी बात हो रही थी, मैम ने भी कहा कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में एवरेज परफॉर्मर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे 58% मार्क्स आए थे बीएससी में, हायर सेकेंडरी में भी मेरे 58% मार्क्स थे। मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन नहीं मिला साइंस में। मेरी माँ मेरे को एक डॉक्टर बनाना चाहती थी, क्योंकि पहले अगर दो बेटे हों, एक का नाम डॉक्टरी में लिखा जाता, दूसरे का इंजीनियरिंग। मेरा नाम डॉक्टरी में लिख दिया उन्होंने। मैं वेटनरी डॉक्टर भी नहीं बन सका। और अच्छा हुआ, बाद में मैंने सोचा कि देखिए यार, इंसान को तो फिर भी बता देगा मेरे पेट में दर्द है, क्या है क्या नहीं। जानवरों का इलाज करना और भी मुश्किल है, वो तो बता भी नहीं सकता कि मेरे को क्या है। आपको और भी इंटेलिजेंस चाहिए, और भी साइकोलॉजी जाननी पड़ेगी कि क्या है क्या नहीं है। मेरे 58% मार्क्स आए थे, मैं गुड़गांव से पढ़ा और मैं प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी रिटायर हुआ। आज भी मैं कैंट आर में एडवाइज़र हूँ। मैं कई लोगों को एग्जांपल देता हूँ, खाली ये जो डिग्री विग्री है ना, आईआईटी आईएम्स, मैंने सारे 20 आईएम्स में लेक्चर दिया हुआ जाके। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब लेक्चर देता हूँ तो उनको बोलता हूँ कई बार जाके कि बोलता हूँ यार तुम्हारी यूनिवर्सिटी ने मेरे को एडमिशन नहीं दिया था, पर आज तुम यूनिवर्सिटी में बोलने आया हूँ। वो एवरेज परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस भी अच्छे कल्चर में बढ़ जाती है मैं उस पर। तीसरा है स्पिरिचुअल, स्पिरिट बिहाइंड द रिचुअल होनी चाहिए कि क्या है। मैं इसमें रिलीजन को कहीं नहीं लेके आ रहा बीच में। चौथा है होम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 स्पोक्स हैं, 6 में अभी होम आ गया और ऑफिस आ रहा है बीच बीच में, जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप घर पे ठीक नहीं है ना, खुशी नहीं है, तो आप ऑफिस में कितना भी कुछ नहीं कर लो। हमने कई बार देखा होगा, स्कूल में भी, कॉलेज में, स्कूल में भी हम बोलते थे यार टीचर कहीं घर से लड़के तो नहीं आई। ऑफिस में भी बॉस को यही बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं 90% जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं ना, आप ही को डिस्कस कर रहे होते हैं। वो लेवल अलग अलग है, अलग अलग लेवल पे, नीचे के लेवल पे अलग है, ऊपर के लेवल पे अलग है, पर डिस्कशन आप ही का चल रहा है। पर मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर आप घर पे खुश हैं, सुख हैं, ऑफिस में जाके, ऑफिस में जो 9 बजे काम करने आया वो तो काम ही करने आया ना। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उससे क्या काम करवाएं, क्या ना करें। और घर में मैं बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कल ही एक जगह सुन रहा था, कि हमें अपने पेरेंट्स के पास बैठ के टाइम बिताना चाहिए, जो मैं बिताता था। मैंने अपने कैरियर को दाव पे लगाया। मैं जब बजाज में था तो मेरे को ग्रोथ मिल रही थी बॉम्बे जाने की, मैं नहीं गया। मैंने फैमिली प्रायोरिटीज़ को पहले रखा, क्योंकि घर पे अगर आप खुश हैं, आजकल डाइवोर्स रेट 3 कपल में से मैंने देखा है 1 कपल का डाइवोर्स हो रहा है आजकल, क्योंकि सब लोगों को घर पे अपनी वो खुशी नहीं है। मेरी एडवाइस है यूथ को कि अपने पेरेंट्स के पास बैठें, समय बिताएं। बाद में वो श्राद्ध में कौए को और गाय को और उसको कुत्ते को रोटी खिलाते रहोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। उस चीज़ को माँ बाप से पूछिए क्या खाना है, उनको आउटिंग पे लेके जाइएगा, उनसे जो खर्चा कराना है। मैंने कई जगह देखा है कि पिताजी का अगर चश्मा टूटा है ना, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती बाप बेटे को कहने की बेटा चश्मा मेरा बनवा दे। आई थिंक ये अगर हमारा कल्चर रहेगा, घर पे अगर हम खुश रहेंगे, वही कल्चर अगर हम ऑफिस में लेके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर है वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में हम ज़्यादा टाइम बिताते हैं घर से, वेकिंग टाइम, क्योंकि घर पे हम सोते हैं काफ़ी टाइम उस टाइम से। तो वर्क प्लेस में हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तभी सॉल्व होंगी अगर हम घर में ठीक हैं। और लास्ट पॉइंट है सोशल, जो 6 स्पोक्स हैं। सोशल में हम, आजकल का जो यूथ है ना, वो सोशली थोड़ा धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है। मेरे को याद है जब मैं 25 साल का था तो एसोसिएशन में बहुत एक्टिव रहता था। हम दिवाली, होली, सारे त्यौहार मनाते थे और एक कलेक्टिवली 50,000 रुपये इकट्ठे करके करते थे, और कोई बीमार हो जाता था तो उसको हॉस्पिटल भी लेके जाते थे। पर आजकल हम सोशली कहीं ना कहीं हमारे पास टाइम नहीं है, और उस टाइम को ख़राब करने वाला एक जो यंत्र है वो ये आ गया। हम घर पे भी बैठे हैं, मैंने देखा है सैटरडे संडे को हम इकट्ठे बैठते हैं, 4 या 5 लोग हम इस पे होते हैं, फेस टू फेस बात नहीं कर रहे होते हैं। और कई बार हम एक रूल बना लेते हैं, नहीं इसको छोड़ दो मोबाइल को, 5 मिनट बाद दोबारा अपने आप आ जाता है, पता नहीं कैसे आ जाता है अपने आप, सभी के, मेरे भी आ जाता है। तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। आई थिंक सोशली हमारे को देखना पड़ेगा। और एक हार्मोन है जिसको कहते हैं डोपामिन, वो हमें तभी सिक्रेट होता है जब हम खुश होते हैं। आज हमने क्या किया, पहले हमारी खुशी होती थी, हमें
दिन में 3-4 बारी खुशी मिलती थी। अब खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं हम? रील्स में। मैंने देखा अपने आप ही हंसे जा रहा हूँ। अरे मैंने कहा क्या हुआ भाई तुमको? तो क्या है, छोटी छोटी खुशियों में अगर हम ही करने शुरू कर देते हैं तो जब बड़ी खुशी आती है हमारे में वो डोपामिन सिक्रेट ही नहीं होता। और हमारे हैप्पीनेस का एक और प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं वैलिडेशन। स्टेटस डाला, कितने लाइक आए? मैंने बर्थडे डाला था, कितने लाइक आए? किसने मेरे को विश नहीं किया उसका रिकॉर्ड उसके पास में है। किसने किया उसको थैंक यू नहीं कर रहे। और हमें थैंक यू तो करना ही नहीं आता। इंडियन कल्चर में बहुत ही हमारी कमी है। आई थिंक सो हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स हैं जो मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें वी विल कवर कि हमारे को करना क्या है आज की डेट में। मैंने अभी तक आपको प्रॉब्लम बताई है, इसके बाद हमें को करना क्या है, उसके बाद में भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं मैडम के पास, हमारे पास। वी विल कम बैक टू दैट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस हियरिंग। थैंक यू। Thank you, Anil, for giving us tips to find out the तीसरी बकरी. And you have started with industrial revolution, to difference between happiness and success. Actually, you just go back to your books and anywhere, can we define happiness? Is there any written like quote or something for happiness? Happiness is a feeling which you have to realize. Self-realization. Happiness is not a product. Happiness is nothing which can be taken from others or buy from market. That is why no definition. You just feel, are you happy? What 6 points Anil has given, family to workplace, self, we can ask question, where is our place? Are we happy with our home culture? Or are we happy with, one thing is happy, work culture, home, but are we happy with work culture? Are we happy with our contribution? So happiness, engagement. I think engagement still we can define, but happiness is your self-realization. So thank you, Anil, for giving us. Now I would like to call Mr. Saurabh. He's a seasoned global human resources leader with over 18 years of experience. He excels in managing global talent acquisition programs, enhancing hiring process across APAC, Latin America and the US, which boosted recruiter productivity by 40%. Now Saurabh will tell us how he increased this productivity and boosted the morale of people through his insight, through his suggestions. I think we can take some suggestions. We can incorporate certain suggestions in our work also through his presentation. Saurabh. Hi everyone, good afternoon. I feel if anyone is standing between you and your lunch, that's me. So I'll keep it short and sweet. अनिल सर को टॉप करना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, तो कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा जिस सुजाता मैम ने आपको बताया. I think I've factored some unknowns which led to a lot of learning. Building a company during COVID time, when we signed an acquisition across 9 countries, 3 continents, like Latin America, which was completely unknown. Like it's, if you have seen Netflix, Pablo Escobar, it's not like that. I've been to Mexico, I've been to Colombia, very fortunate to meet local people. I learned language Spanish to speak with them because approximately 70% of our employees did not speak anything in English. And how do you then drive people towards a single goal, and that too at time of COVID, when access to being in same room was not possible? How do you drive also
engagement through a virtual medium have been some of the learnings. But I'll probably, talk about right now in next 10 minutes, talk about a more structured approach. Anil sir ने पूरा ज्ञान का सार तो दे ही दिया है, but let me put a little framework to this discussion, and then I'll share more examples when we talk about details. So see, why employee happiness at all? See, we pay employees, they come deliver work. So why were we even talking about being happy? So in today's business landscape, success of an organization is tied to well-being of the employees. And I'm going to, talk about employee happiness and not engagement, not from a good to have perspective or a nice to have perspective, but how it is leading to business growth is something that I will try to bring together. So let's first look at what is the business case. And I think before that, let me just take you through the flow. First, we'll discuss about the business case. Then comes next, how happiness drives productivity, how employee engagement and employer branding are linked, what is the role of leadership in this engagement process, what are effective strategies. अनिल सर ने कहा था सब कुछ बता नहीं देंगे, बट अब इन्होंने जो नहीं बताया मैं कोशिश करूंगा वो बता दूं, कुछ मैं भी ऐड कर दूं. Measuring the ROI, because at the end of the day, so many of us talking to business leaders or being business leader themselves, at the end of the day, if there's no ROI, then all the efforts are not aligned. And finally, some of the challenges and solutions. So let's talk about the first thing, that why do we even talk about it? Next. I think मैं क्लिक करके रीच से बाहर हूँ, दो मैं इनके काफ़ी पास हूँ. Yeah, next. Yeah. So there is an Oxford University study which says that happy employees are 13% more productive. While the number of 13 may not be a huge, but just look at incrementally, 13% at an annual rate would double your productivity in less than 5 years. So it's not about feeling good, it's about are employees feeling creative? Are employees feeling that they can create more smarter solutions? Or are they just dragging their bodies to work every day and possibly waiting the time when the, like Anil sir was saying, when the boss leaves, कि अब time हो गया घर जाने का. So I'll also take one example from Gallup study. They bring phenomenal studies. I have very less time to go in depth of studies, but I will lead you to some of the things that you can read if you're interested. So Gallup has a study which was on employee engagement, and they looked at the companies who did employee engagement well and those who did not. And through this survey, they could say that companies who consistently engage their employees outperformed others by 200% of employee productivity difference. And I'm also going to take some examples. My examples will be largely tech organizations. In and around our ecosystem, I've largely worked with a tech organization. My current company is also a social media startup. It's in technology. So I will take some of the benchmarking companies that we all know, like Google. Google did an internal study. Google tends to not always believe in external studies, but they have a lot of employee data that they analyze. So Google people operations team discovered that by their own initiatives of engagement, their employee productivity and happiness increased at a 37%. This is their employees themselves certifying that your system is working well for us. So, so the question is, okay, now it is linked. We all know. How do we do that? How do we link productivity and happiness? Okay. Yeah, can you go to the next slide? Yeah. So, first point, enhanced creativity. So, happiness is not sitting at a corner and smiling in office. Of course, that's one part of it.
The second part is, which is a Harvard Business Review study, which says happy employees tend to be more creative. And creative solutions can bring in not incremental, but drastic way of how you do your business. Probably it could cut your time to production by half versus having a 10%. So creativity is important. There is a big thing about turnover, which Anilji has already mentioned, that in the previous generation it was one employer for lifetime. Now people are switching, and different industries are at different attrition rate, starting from like 8-10% annually to something like, which I heard in retail sector, 65%, which is absolutely crazy. Means in 2 years, you probably have the entire new set of workforce working for you. So how do you bring down that attrition? And the companies who did that in this study found that their engagement led to attrition rates coming down by 25 to 65%. And I think that's one feeling of belongingness which comes into employees, leading to more productive and more happy workplaces. There is also one aspect which came into Gallup, which is like happy employees are able to take better decisions. And I think that's something which we don't usually talk about. But imagine not only leadership and managers whose decisions impact like larger set of workforce, but an employee himself or herself bringing them to work every day and taking right decisions. How much of less stress it would bring, how much of the joy it would bring if what you do is aligning to business faster and better. Next one. Somewhere we had to talk about branding. I couldn't find a lot of instances, and it's very difficult to say that your happy employees will lead to a better brand, because companies spend like literally millions of dollars every year to build their brand across platforms. But let me take example for one of the platforms which is very known for employer branding, which is LinkedIn. And LinkedIn themselves, they show that data that 67% improvement in employer brand by their own employee engagement. And how does it work? Imagine, I don't know how many of you use LinkedIn like at least once in a week? Raise your hands. Or every day? Every hour? Okay, so then definitely, we have some power users here. See, what happens is when you use it that often, lot of content you consume and lot of people you interact with. So if you want to apply for a job, like Mr. Anil said, it's no longer need-based. It's that want, it's that desire. So if you desire to apply for a company, you want to check the waters by talking to the current employees. Now imagine if your current employees are not happy, what kind of answers they give. And LinkedIn is still a platform which gives more one-on-one communication. Look at Glassdoor reviews. And I think, again, that's one area that one of the companies I worked with, OLX, we partnered with Glassdoor team to respond to all the people who are inside your company and as well as ex-employees and talking about you. And the best thing is, in Glassdoor, you can't delete a comment. So if somebody has said that your management is whatever XYZ, that's the kind of words that are used, you can't delete it. But what you can do is, you can respond to it. You can show that you are an empathetic listener organization. And I think that's where this LinkedIn shows that the moment you have happy employees, they become your brand ambassadors. You don't have to spend millions of dollars to actually acquire more talent, but you can be a talent magnet. Salesforce is also one of the example. But I want to move to next slide and talk about the role of leadership in this entire process. And we all know it's very pivotal. If you look at Gallup survey,
And I think before that, this one line I specifically added, because there are so many leaders here. It all begins with you. At the end, you are a leader, you are an employee. If you yourself are happy, you would create that kind of positivity around you. But for those of you who are managers and leaders, it's even more critical to be in the right frame of mind to provide the leadership to your teams. And this is Gallup survey which says 70% of the variance in employee engagement is attributable to managers. So I think as managers, let's think about when is that we think about employees and make it a daily habit to think about the people who work with us. And this means that not only your behaviors or attitudes are critical, but you also need to do something as a leader or manager to make it happen. Fostering open communication, be approachable leader. जिस बॉस से सबको इतना डर लगता है कि उसके पास जाके कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, उसे कभी फीडबैक मिलेगा ही नहीं, वो ही गलती करता रहेगा. और एम्प्लॉइज जैसे बात कर रहे थे कि सारे ही एम्प्लॉइज बात करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वो बातें कैन बी डाइवर्टेड टू सॉल्विंग कंपनी एंड कस्टमर प्रॉब्लम्स इफ बॉस इज सॉर्टेड. सो आज हम बॉस को सॉर्ट करते हैं. सो ओपन कम्युनिकेशन बहुत ईजी है कि आप अप्रोचेबल हो, कोई आपसे आके बात कर सके. रिकॉग्नाइजिंग अचीवमेंट्स. It's not just saying this, but meaning, doing small gestures, even taking team out for a tea or a coffee on occasion when an employee does well is one of a good way to recognize. Then aligning individual goals with company objectives. One of the discussions or internal company surveys that we did, we realized the biggest roadblock is transparency. Same linking it to what Anil ji said, that जो इंफॉर्मेशन पहले एक केबिन में थी वो ओपन है, बट स्टिल योर कंपनी डेटा मे नॉट बी, कंपनी स्ट्रैटेजी मे नॉट बी, एंड इफ इट इज देन एम्प्लॉइज मे नॉट अंडरस्टैंड. एंड आई थिंक द डे दैट यू क्रिएट कि मैंने आपको जो कहा है वो क्यों कहा है, आई थिंक दैट पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, द डे इट कम्स इन ओपन, creates that kind of ownership. So think of employees not as renters, and this is our company, one of the values, that we don't feel that we are on rent here. We feel that all of us are owners in this company. And then moving on to the next part, how do we do it? Like we all talk about it is essential link to business, leaders take the responsibility, but end में करना क्या है? Employees को outing पे ले जाओ गोवा, आजकल लोग बैंकॉक लेके जाते हैं. Would that relate to happiness? Maybe. I'm not denying that. It kind of works. Paying more money, would it work? Maybe. But I think there's no proven way that if you give money and give hostile environment which is toxic, employees will perform to their best. They may still do, they may need the job, but they may not do well. So what you could do is first provide them meaningful work. Let them understand that why they are doing and what they are doing. That's the first part. So there are 5 elements. First is meaningful work. Second, which I stressed in my previous point, a very supportive management, which is I think management should not be seen as someone who are like closed doors, not approachable, but who are there when you need them. A positive work environment, which we have been discussing, that how do we create a positive work environment. Growth opportunity. I think people bring themselves to work to grow, and especially in current generation. Ma'am was talking about Gen Z, I'm talking about Gen Alpha and so on. Literally the ones who are now graduating through schools, they will come for growth. They will not come for literally their day-to-day paycheck. So how do we create growth? And finally, very important, do they trust you? If they don't, then possibly you don't have to fire them. They will leave on their own. And I think Facebook is one company who integrated some of these into a framework and did that. And they also published a study saying that it led to a 32% increase in overall employee satisfaction in the company. So I think these strategies not only enhance what we call as employee experience, but also contribute to company success. And now if we are talking about ये कर देते हैं इससे ये हो जाएगा, क्या कर देते हैं ये हमने देखा, क्या हो जाएगा वो भी बहुत ज़रूरी है समझना.
Uh, what I learn a little about management is whatever gets measured gets done. So if you are talking in air that let's do for this for employee, that do that, and neither you're measuring the current state or future state, all the effort is a cost to organization. And the organization themselves does not know that whether we have improved, whether we have decreased the score, or whether it has remained the same. So I think ROI is very, very important. And the companies who actually, and this is a Gallup study which ma'am also was referring, that who did this and measured, they saw 22% increase in profitability. So we are not talking about happiness just about a party in Goa. We are talking about a day-to-day culture of making employees, their well-being a priority for all of us leaders, and in return, increasing the business productivity, which leads to more growth for everyone and more partnership, more ownership, and growing together. But I think all said and done, it's not an easy task. I want to put my last point as this, that there are challenges. Solutions हम बाद में बात कर लेंगे, but challenges क्या होते हैं? First, low participation in the program. People think यार क्या यार, पहले तो शाम तक काम करो, उसके बाद हमें ये शाम को ऑफिस का इवेंट है, जाना है, हमें अपने घर पे टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिल रहा. So first is, how do people use water resources? And then there are definitely some more solutions, but I see that I'm off time, so I will pause here. Thank you all for being a wonderful audience. Thank you, Saurabh, for sharing the data, which actually says 25% to 65% absenteeism reduced, 67% addition and branding, and the role of leader, top of that, 70%. So Saurabh has shared all the data related to engagement of employees and how engagement of employees leads to productivity and building brand for the organization. Even Saurabh has shared certain challenges during COVID period in hiring and engaging people, and we all faced those challenges. Now, keeping time in our mind, and I would like to invite Krishan. He is the founder and managing director of Organic Wellness Products Private Limited, a gold medalist in chemical technology. He has a diverse career with leading companies like Colgate, Gillette. He promotes organic wellness products globally, blending India's heritage and modern science, and supports marginalized farmers. I think somewhere this, his insight will give us how to create happiness, because he is working for global wellness, organic wellness, and wellness is also somewhere linked with our happiness, our productivity, our engagement, mental well-being. So I would like to invite Krishan for his insight on this topic. Thank you, ma'am. Thank you, Mr. Sood, for your invite as always. मैं बाहर वैसे बाइट ले रहे थे तो मैंने कहा यार तो मैं 20वां साल है शायद मेरा. On year over year, I am here, and thank you and salute to you, Mr. Sood, once again for this wonderful event, which you keep doing year over year, and many, many more to come. दोस्तों, मैं organic wellness चलाता हूँ. What I will share today with you is practically what I am doing in a real way. Organic wellness is a business where my factory is located about 450 kilometers from here. It is a remotest village. कोई वहाँ जाना नहीं चाहता. अभी भी जाओगे एक भैंस बकरी कहीं चलती दिख जाएगी और बीच में ऑर्गेनिक वेलनेस की फैक्ट्री टनाटन माल बना रही है और करीब 33 देशों में एक्सपोर्ट करती है. 100% लोकल टीम मेंबर्स. चौथी पांचवी पढ़े हुए होंगे शायद. चौथी पांचवी पढ़े होंगे शायद. Every product what we ask them to make,
is meeting global standards and the product is present across India. सूद साहब बता रहे थे यार मैं आगरा में तुम्हारी चाय पी के आ गया, बिल्कुल पी के आया सर, because my team is not only happy, they are delighted with what they are doing. It's a business with a purpose. Unless you have a purpose in life, and that purpose has to really transform to your team members. And they should really feel जो बोल रहा है ये करता है, दौड़ता है और दिन रात उसमें ही लगा रहता है. And that's the reason मैं सब जगह गपशप बातें मारता रहता हूँ, क्योंकि मेरी टीम देश विदेश में, इंडिया में शानदार काम कर रही है. As I say always, 3 very difficult things to do in life nowadays. मोबाइल से दूर रहना, जंक फूड देखते ही उस पे दिल दिमाग ना आना, और यदि पहले 2 काम आपने सही नहीं करे तो ना तो आप मेंटली फिट रहेंगे, ना आप फिजिकली फिट रहेंगे. और दोस्तों, यदि आप मेंटली और फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप खुशी तो बहुत दूर दूर छोड़ जाइए. छोटा सा दर्द हो जाता है, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, और आप मेंटली और फिजिकली दोनों ही फिट नहीं है. नाउ लेट मी कम टू स्पेसिफिक्स. 3-4 चीज़ें जो मेरे दिमाग में, मेरे दिल के बहुत क्लोज हैं, जो मैं अपनी कंपनी में कर रहा हूं. नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट, द मोमेंट वी हैव अ न्यू टीम मेंबर, मैं 24 घंटा उसको अपने साथ रखता हूं एंड ट्राई टू मेक श्योर कि वो ओनरशिप महसूस करने लग जाए. वो टीम मेंबर नहीं है, वो मालिक बना दिया जाता है. बड़ी से बड़ी गलती कर दी जाए, कोई टेंशन नहीं है. चोरी नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. दीज आर 2 थिंग्स वी कीप अवे. लेटेस्ट एग्जाम्पल, एक नया लड़का आया सतीश, 74,000 रुपए का अमेजॉन पे गलत एड चला दिया. आया वो मेरे पास, सर ये 74,000 का चल गया, सेल नहीं आई, क्या हो गया? एक्सीलेंट, वेल डन, आगे और देखो. इस महीने उसने 14,000 रुपये के एड चला के 14 lakhs की सेल कर डाली. What I did? Really gave the ownership to the person. Really made him the owner. और मेरे पास चारा भी क्या है? सोचिए जरा, यदि मैं इतना होशियार होता तो उसको लेता ही क्यों? समझिए जरा. And what we do? We hire the best of consultants. सबसे बड़ा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, सबसे बढ़िया आदमी लेके आते हैं, और या लड़की लेके आते हैं, या वो भी टीम मेंबर लेके आते हैं. जब वो ज्वाइन करता है या करती है, क्या बोलते हैं? आ गया या आ गई, समझ जाएगी बहुत जल्दी अपना यहाँ का कंपनी का कल्चर क्या है. आप समझिए, यू आर इन्वेस्टिंग योर लाइफ इन अ बिजनेस. 10 से 12 घंटे आप ऑफिस में बैठते हैं, 2 से 3 घंटे आप सड़क पे रहते हैं. घर पे तो केवल आप होटल हैं भाई, सोने जाते हैं. सच्चाई है ये. वेदर वी लाइक इट और नॉट, दैट्स अ हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ. अभी घर नहीं बचा है, वो एक तरह से होटल है. इट इज ट्रू विथ मी एंड ट्रू विथ वन एंड एवरी वन. मेरे पास फिर भी थोड़ी लग्जरी है, मैं कभी भी जा सकता हूं, लेकिन मेरी जो टीम काम कर रही है उनको ये लग्जरी भी नहीं है. और उनको यदि मैं इसमें सेटिस्फैक्शन और कंफर्ट ना दूं तो ना तो वो खुश रहेंगे, और वो खुश नहीं रहेंगे तो मैं खुश नहीं रहूंगा. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माय टीम मेंबर नोज दे हैव माय बैक. केवल कहने के लिए नहीं, पैसे की जरूरत है, कितनी भी रिक्वायरमेंट हो, यदि पर्सनल चैलेंज है, हम पीछे नहीं हटते. आई विल शेयर 2 simple examples. I just met a person, he works in our company, ऑपरेट करता है मशीन को. हॉस्पिटल में था, मैं क्या कर रहा भाई? बोलते सर मेरे डॉटर को ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर है. फिर परेशान क्यों हैं? बोलते सर 14 लाख रुपए बोल रहा है डॉक्टर. मैंने क्या हो गया? सर चेहरा बदल गया था. चेंज इन फेस इटसेल्फ. फॉर्चुनेटली वी मेक लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. गॉड हैज बीन काइंड, उसको
उस ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी. With the products what we make and the diet changes, the daughter is fit and fine. But what it gave the message to the team? Here is a person who is available 24 hours if required. एक और लड़का है हमारा अभी, उसको दिल का ऑपरेट करना पड़ा. बचपन से दिल का ही परेशानी थी. फैक्ट्री ही लेट पहुंचा, ऑफिस ही लेट पहुंचा. मैंने भाई कहाँ रह गया था? बोलता सर मैं सोता ही निकल गया, मेट्रो में आ गया अगले स्टेशन पे. मैंने क्या हो गया? बोलता सर आज तक जो मेरे को बोल रहे थे ऑपरेशन करा ले, ब्लड दे देंगे, आज सब गायब हो गए, इंक्लूडिंग माय फादर. क्या? इट्स अ बिग ऑपरेशन ही हैड टू गो थ्रू इन अवर दिल्ली हॉस्पिटल इटसेल्फ. मैंने क्या चाहिए? बोलता सर 2 यूनिट ब्लड चाहिए भर्ती होने के लिए और वो कोई नहीं दे पा रहा. चलिए अगले दिन मॉर्निंग हम ब्लड डोनेट करके आए. मेरी वाइफ अवेलेबल नहीं थी, शी ऑलरेडी डोनेटेड द ब्लड, वी गॉट समवन एल्स. सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैंने एक को ब्लड नहीं दिया है. द मैसेज हैज गॉन टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर एसोसिएटेड विद मी. इफ रिक्वायर्ड हियर इज अ पर्सन हु इज रेडी टू डोनेट हिज ब्लड ऑल्सो. पैसा तो बहुत छोटी चीज है. आप समझते हैं कि लोग खुश नहीं रहेंगे? सर जान देने को तैयार है कंपनी में. उस फैक्ट्री जो 450 किलोमीटर दूर चल रही है, मेरे पास कोई HR हेड नहीं है, मेरे पास कोई VP नहीं है, कोई डायरेक्टर नहीं है, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है. हाँ, कोविड से पहले हर महीने चला जाता था. कोविड ने सिखाया क्या करता है, जाके अपने 2-3 दिन बिगाड़ के आता, 20-25 हज़ार रुपये बिगाड़ के आता. अभी मैं साल में 1 आध बार जाता हूँ, जब गपशप मारनी हो, मजे करने हो, जब टाइम पास करना. That too not for doing some improvements and all. मेरे से अच्छा जानते हैं. मैं किसान को खेती करना क्या सिखाऊंगा भाई? यदि वो खुश है, उसको सही दाम दे रहा हूँ, सही टाइम पे दे रहा हूँ, उसकी इज्जत कर रहा हूँ, सर वो मेरे को सब चीज़ सिखा सकता है. And that is what I carry back as far as my team is concerned, be it my personal life or professional life. मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मेरे से 100 गुना आगे हैं सर. मैं सोचता ही नहीं मैं होशियार हूं, इसलिए खुश रहता हूं. सेम थिंग ऑफिस में है. यदि मैंने बता दिया आई एम बेटर देन यू, तो कर लो भाई, सिंपल. तो बहुदू बेवकूफ बन के रहते हैं, एंड दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल बिकॉज दे डिलीवर द रिजल्ट्स ऑल्सो, विच इज अ फैक्ट एंड फिगर. फाइनली, बिकॉज टाइम इज ऑलवेज अ इशू, एक ही चीज बोलता हूं मैं, दोस्त, अपने दिल की सुनो, लेकिन किसके दिल की? अपने परिवार की. चाहे वो फैक्ट्री के अंदर आपकी टीम हो, या ऑफिस में आपकी टीम हो, या पर घर पे आपका परिवार हो. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. Thank you, Krishan. Thank you very much for giving us some tips for creating happiness quotient. The way he created happiness quotient in his organization through rural people. You just check with youngsters, they're not willing to go back to the rural areas. But there also he created business with purpose. There is a purpose, is a well-being of people. Whatever medicine, whatever products he has, that is for us, for our well-being. So there is a purpose in his organization, and that purpose gives happiness to everyone. And one thing, Krishan, you talked about the new induction program, the way you induct new people, and you just keep along with you to learn ownership. And this is the shadowing a leader. The activities of a leader can be taught to the followers, either employee, student, or anyone in your life. So because of paucity of time, the floor is now open for two questions, 2 to 3 questions, and then we can sum up this session. So now, yes, ma'am. Yeah, very good afternoon to the panel. It's not only one question, I have a couple of questions in my mind. So the question to the panel is, how do you track or measure employee happiness? The other is, what is important for you, employee happiness or employee engagement?
And the third one is, what are the important factors which are affecting retention within Gen Z employees these days? So anyone? For the last Gen Z employees, because Yes, the mic is there. hello. Ma'am, I'll take the question in reverse order. The last one is the most pertinent to me, Gen Z. 80% of my company is Gen Z, and I keep talking to them and learn that what is important to them. Couple of things I shared. So we all think that they come here for money, but whenever I speak to them, I get a feeling they need more transparency, they need more understanding, and they need growth. The moment you talk about these, everything else is secondary. And I think we think more about that, हमारे cafeteria में किस तरह का खाना है, हम employees को और क्या comfort दे सकते हैं, फिर भी office क्यों नहीं आ रहे हैं, why hybrid to in-office transition is so difficult, is that they're thinking that they spend more money in commuting? No, they want to do all that, but they want to know what they are working and why they are working. The moment we do this, can solve, at least for Gen Z. Anything for work-life balance, if you can. I see, I think as long as, I feel work-life balance is a gone term in these days, which is connected. It's more work-life harmony, which means when you need time to take off, whether to take family, whether for your own interest, you should be able to do that. And when you're able to, contribute to company, you should be able to do that. I don't think any time now fixed office hours in many of the services sector organization, and I think manufacturing, it may be still relevant. I can't talk about them because I've largely worked in tech companies, but in tech companies, I think that hours may not define, but what you think and what you execute, and when do you do it irrespectively. Like we work for a social media app, it's 24/7. So when your idea gets to execution is not important, but what gets to execution is more important. Thank you. So just I would like to add one more thing regarding the work-life balance. Sometimes I feel this is our choice. This is our choice, what to do and how to do. If we want, if we wish, we can create work-life balance. Nowadays, you can see majority of youngsters, they're spending time at home because they have work from home, but they don't have time for home, for family. Majority of youngsters, hardly they go for 2 days in a week or 1 day in a week to office. Rest they spend time at home, working from home. But see their life. They are creating their own life miserable. There is no happiness quotient there. Maybe after a few years, we will get the data by Gallup and other big research organizations, but right now, this is the condition. How do you track or measure the employee happiness? How to? How do you track or measure the employee happiness? There is no metrics. I told you that happiness is your feeling. You have to decide. Happiness, there is no such definition. How as an organization should track and measure the employee happiness is tracked with productivity. What he said, there is a purpose, Krishan said, there is a purpose in organization. He created happiness quotient not with पढ़ा लिखा बंदा. उनके यहाँ कौन काम करता है जो पढ़े लिखे नहीं है, but still he is able to lead the productivity and brand for the organization. That happiness, once you are happy, you will contribute a lot. You are engaged mentally with your work, and you can give 100% if you are happy. Not satisfied, I think, just 1 minute, we know the Maslow's hierarchy, and now we are working on Herzberg. Satisfied? Not satisfied. We are satisfied with hygiene factors, maybe not satisfied with recognition, motivators. We have to create balance. And that a leader can do. Thank you so much. Any other question? I think this table, yeah. Ma'am, my question is this. Good afternoon to the panel. My question is from Anil sir and from you also. As you said that the employees are the brand ambassador of the organization. So let's suppose an employee is working from last 13 years in the organization and he's not been appreciated. So what do you
think about it, whether that employee will be a brand ambassador, yes or no? And what can be done in that case? First, just a very small answer that that employee is not brand ambassador, because once he is not happy with the organization, just staying in that organization, he will not create outside the organization a brand for organization. But organization is not recognizing his efforts or So her that efforts. is why he is not creating brand for the organization. He just there sustaining. But Gen Z will not stay in that organization if you are not recognizing them. This is with baby boomers, I can say, because that kind of culture and mindset was, we are just living, I think somebody told, we are just like satisfied. Anil told, the first level was just to satisfy your basic needs. Exactly. मैं आपको बताता हूँ, आप सिंगापुर कभी गए? नहीं सर, कभी नहीं गई. सिंगापुर जाएंगे ना तो सबसे पहले आप जब टैक्सी ड्राइवर है ना, उसको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है. Okay. बिकॉज आप किसी भी कंट्री में जाते हो, आफ्टर द इमिग्रेशन आपका पहला इंटरेक्शन किसके साथ होता है? टैक्सी ड्राइवर के साथ होता है. और पहले आपने देखा होगा दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको मसूदपुर वाली काली पीली टैक्सी मिलती थी और सर्दियों में कंबल ओढ़ के चलता था वो. और वो जो आता था वो रहता था ताज पैलेस में या मॉरिस शेरेटन में. उसको वो 20-25 मिनट काटने मुश्किल हो जाते थे. क्यों? उसको क्या लगता था, यार मैं कौन सी कंट्री में लैंड कर गया. सो योर टैक्सी ड्राइवर इज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर when you interact with any of the, when you go to any company, any country. And I am in sales, मैं 40 साल से हूँ. कंपनी कुछ भी माल बना ले, जो बेचने वाला है ना, we have to sell the product first, we have to sell ourselves. We are the first brand to the thing. और आपको अगर कंपनी के बारे में नहीं पता तो फिर क्या है? आपकी बात सही है, पहले हम अप्रिशिएट नहीं करते थे, खाली उसको उसकी गलतियाँ गिनाते थे. और किसी कवि ने सही लिखा है, कहते हैं हादसों के शहर में हादसों से डरता है. मिट्टी का खिलौना है, फना होने से डरता है. फना मतलब टूटने से. हादसों के शहर में हादसों से डरता है, मिट्टी का खिलौना है, फना होने से डरता है. मेरे दिल के कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख ये दुनिया बड़ा होने से डरता है. अरे हम उसकी गलतियां गिनाते रहते हैं, हम उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते. और मैंने पहले भी कहा था, हम कहते थे द यूथ इज यूजलेस एंड केयरलेस. यूथ इज एक्चुअली यूजलेस एंड केयरलेस. आप उसको सही ढंग से यूज़ करोगे और सही ढंग से केयर करोगे तो आपको अच्छा आउटपुट देगा, रादर दैन कि आप उसको गलतियां गिनाते रहो. वो पहले टाइम निकल गया कि हम सुबह से शाम तक गलतियां गिनाते थे, वो टाइम निकल गया. अब आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा. मैडम एक चीज़ और है, आपको 30 साल वो एम्प्लॉय रहा है, उसको सैल्यूट. एप्रिसिएशन नहीं है तो भी वहाँ है, तो उसको पहले क्वेश्चन करना है कि वो है क्या चीज़. So thank you. I think I'm sorry because of paucity of time. We are not able to take on a few more questions, but later we can discuss during lunch. And I would like to thank you, my esteemed panelists, Anil, Saurabh and Krishan. एक मिनट का टाइम दोगे तो मैं सूद साहब के लिए बोलना चाहता हूँ. वो कहते हैं समय नदी की धार की अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा बलवान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं. अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ सूद साहब जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं. जैसे कहा किशन जी ने कि पिछले 20 साल से ये कर रहे हैं, मैं पिछले 5-6 साल से अटेंड कर रहा हूँ. और जब भी इनका इनविटेशन आता है, मैं हो गया चाहे और भी मेरे साथ के जो साथी हैं, कई लोग यहाँ मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि ये इस एज पर भी वो इतना एनर्जी और इतना टाइम डिवोट करते हैं और इतने सारे लोगों को यहाँ बुलाते हैं. इतना आसान नहीं है सर, मैंने देखा है. जब तक आदमी प्रेसिडेंट होता है ना किसी कंपनी में, तो उसकी चल रही होती है. उसके बाद वो 4 आदमियों को फ़ोन करता है तो कहता है सर आई विल कॉल यू बैक. तो वो आपको कॉल यू बैक नहीं करते, आपको फिर भी वो उसी रिस्पेक्ट से बात करते हैं. सर जिस दिन प्रेसिडेंट हट जाता है, फेसबुक पे जो 2000 लाइक आ रहे होते हैं ना, वो 20 भी नहीं आते. So thank you once again. Thank you to the panelists. Thank you to the audience. And thank you once again, Mr. Sood, for giving us this opportunity on a wonderful topic. Just I close this session with a remark of Simon Sinek. Quote, when people are financially invested, they want a return. When people are emotionally invested, they want to contribute, unquote. Thank you. So with that, we come to the end of this panel. Before we move on to the felicitation ceremony, I just quickly take a minute to thank our sponsors. So our sponsors for the day are Indian Oil Corporation Limited, NLC India Limited,
GAIL India Limited, IFCO Limited, Oil India Limited, Barmer Lorry and Company Limited, Triveni Engineering and Industries, Moil Limited, LIC of India, Central Cottage Industries Corporation of India Limited, Organic Wellness Products Private Limited, New Delhi Institute of Management, and our media partner, India Blooms. Now I'd kindly like to invite Sood sir up on stage so that we can commence the felicitation ceremony. First up, I would like to invite Dr. Sujata Shahi forward, and she'll be felicitated by Mr. Sood. Can we please have a round of applause? Now I'd like to please call forward Mr. Krishan Guptaa, Managing Director of Organic Wellness Products Private Limited. Please can we have a round of applause? Now I'd request Mr. Anil Bhasin, author and motivational speaker, to please step forward. Can we have a round of applause for sir, please? Now I'd like to please invite forward Mr. Saurabh Sharma, Head of People at Hunch. Mr. Sharma, can we have you